Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 4th and 5th of May. The session will be quite an important and interesting session. In this video students, we will be talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to Maharashtra, Kerala and Andhra Pradesh. Then we will be talking about the 69th ED Foundation Day celebration that was held in New Delhi. Next thing, we will be talking about how we can enhance the MSME competitiveness in India. How can we grow this sector? Next thing, we will be talking about President Draupadi Murmu ma'am has launched various initiatives for welfare of senior citizens. Next thing is Jadhav, that is Union Minister of State Pratupra Jadhav has inaugurated Yoga Mahotsav in Maharashtra and has launched Yoga Sangam portal. These and many more news will be discussed in this video, so stay tuned with us till the end. Also students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. Also share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors and let them know about this interesting platform. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. That helps you prepare for the competitive exam in a much refined way. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. We are talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to first Maharashtra, second Kerala and third Andhra Pradesh. They were from 1st to 2nd of May and here various development projects has been inaugurated. First, remember during his visit to Maharashtra, PM Modi inaugurated India's first of its kind Waves 2025. This is a 4-day long summit with tagline that is connecting creators, connecting countries. Location where was this held? Geo World Convention Center, that is in Mumbai, Maharashtra. It was organized by Ministry of Information and Broadcasting in association with Ministry of External Affairs. Right, this is your first thing. Second thing, remember, is PM Modi dedicated the Winhinsam International Deep Water Multi-Purpose Seaport. This is located in Trivandrum, Kerala. Correct? So PM Modi dedicated this seaport to Trivandrum, Kerala. Correct? So these are the two important things that you need to remember. Apart from this, when he visited Andhra Pradesh, he laid the foundation for multiple projects that are worth around 58,000 crore rupees in Amravati, Andhra Pradesh. As we know, Amravati is now being developed as your green city. Next, if we look at about Maharashtra, Devendra Fadnavis is the Chief Minister, Governor C.P. Radhakrishnan, Capital Mumbai, Tiger Reserve is Melghat Tiger Reserve, Shadri Tiger Reserve. And if we talk about Kerala, Chief Minister is Pinarayi Vijayan, Governor is Rajendra Arlekarji, and capital here is Trivandrum. Next is Union Minister of State Pankaj Chaudhary has lead in the 69th ED Foundation Day celebration in New Delhi in 2025. Now, if we talk about this, right, Pankaj Chaudhary, he not leads, he basically, yes, he led this Foundation Day celebration, right? It was held in New Delhi, correct? And this celebration, correct? What is this basically for? This day, right? And ED, that is your Enforcement Directorate or Directorate of Enforcement, correct? And during this, an annual report is also released for this financial year FY25, correct? And what was the day? It is your 1st of May. Then we observe this ED Foundation Day, that is the 69th edition of it, right? During this event, almost 23 officers and journal units, they were honored with for their outstanding service. Who is the director of ED? Rahul Naveen. Where is the headquarter? In New Delhi, correct?
Then during this, remember, during 2014 to 24, ED initiated 5,113 Prevention of Money Laundering Act investigations with averaging over 500 cases per year. In 30 cases, 15,261 crore was returned to the victims with court approval. Next is Niti Aayog has released a report on enhancing the MSME competitiveness, right? And we know that in India we want to grow this MSME sector, right? With USA also we have partnered with and signed multiple trade agreements where we are seeing that these MSME sectors, these MSMEs that are coming up, they will be growing, right? They will be very beneficial for the economic development of India, as well as these MSMEs, they will be very helpful for job creation in India. If we look at the data, this report provides strategic roadmap to unlock the potential of India's MSMEs through systematic reforms in financing, skilling, innovation and market access. And between 2020 to 2024, the proportion of MSMEs accessing the credit through various scheduled banks, various other finance institutions, it has increased from 14% to 20%. Right? Next is President of India, Draupadi Murmu ma'am, has launched various key initiatives for welfare of senior citizens, right? These welfare, they will be helping to make the day-to-day life of these senior citizens easy. Then during this event, it witnessed a senior citizen welfare portal. This was also launched, and with this portal, the individuals can track about various government schemes that are launched, various healthcare benefits, various welfare services, and also any update, and if there is any opportunity on this portal, it will be provided. And these individuals, these senior citizens, they can avail these services, right? Next, one more thing here, remember, during his President of India, Draupadi Murmu, she has also distributed aids and assistive devices under Rashtriya Vyashri Yojana, right? This initiative, it is basically the government of initiative for addressing the health and mobility needs of the elderly population. Next thing, remember, she has also inaugurated 5 new senior citizens homes, right? I repeat, 5 new senior citizens homes were recently inaugurated, right? In Tawang, Arunachal Pradesh, Wokhla in Nagaland, Vellore in Tamil Nadu, in Anakapalli in Andhra Pradesh, and Nainital in Uttarakhand. So in these 5 locations, these new senior citizen homes has been inaugurated. Next is Union Minister of State Prataparao Jadhav inaugurates Yoga Mahotsav in Maharashtra and has launched Yoga Sangam portal, right? So first thing first, the Moraji Desai National Institute of Yoga and Ministry of Ayush, Yoga and Neuropathy, Unani Siddha, Rova Rigpa and Homeopathy, that is Ministry of Ayush, right? They together organized Yoga Mahotsav, right? This was an event that marks the 50-day countdown to the International Day of Yoga, right? And where this event was held, it was held at Nasik, Maharashtra. Also during this event, this Yoga Sangam portal was launched. This is a digital platform. This is for the online registration for various facilities towards and the synchronized nationwide day celebration of this IDY, that is your International Day of Yoga, that will be observed on 21st of June. Right? Very important, student. And this Yoga Sangam, it is one of the 10 signature events for this day, correct? And this day will be observed recently. Take a note of the date also, 21st of June. Moving on, next is India and Denmark has renewed the Energy Cooperation Pact to boost the net zero emission. That we know, and simple current affairs this is, that we know that countries are shifting towards green sources of energy, right? And they are also getting funded for those projects only that are climate friendly, correct? So this will be helping to reduce the emissions, right, and boost the net zero emission targets of both these countries. Next is Finance Minister Nirmala Sitharaman ma'am inaugurated Corporate Bhavan in Kolkata. What is the location where this Corporate Bhavan was inaugurated? In Kolkata, West Bengal, right? Corporate Bhavan, right? Correct? Take a note of this. This will be a 7-story tall building that will have various facilities, and this center will connect eligible youth that are between 21 to 24 years of age with internship opportunities in various MNCs companies, right? Next is Union Minister Amit Shah, right? He's our Home Minister, has unveiled statue and renamed a road to honor Bodofa. Correct? I repeat,
Bodofa Upendranath Brahma, correct? To honor his death anniversary, this ceremony was organized by the government of India. Correct? Take a note of this. And this was to pay tribute with a 9 feet statue that was unveiled at the road name, that is Lala Lajpat Rai Road in South Delhi, and it was renamed as Bodhwa Upendra Brahma Marg also. Right? Take a note of this. So two things. First is the renaming. First is the statue, and second is the renaming of this road. Correct? So two things has been done here. Next, and this statue can also be asked that it symbolizes what? It symbolizes self-respect. Next is Indian Army and Indian Air Force ALH Dhruv helicopter cleared for operations after safety review. What is this ALH? ALH is your Advanced Light Helicopter, right? Advanced Light Helicopter. The name of this Advanced Light Helicopter of Indian Air Force is Dhruv, correct? So Indian Army and Dhruv helicopter, they cleared for operations after safety review, right? That these clearations, they came after a defect investigation committee. They took time, they did all the operations, all the service requests they need to make sure that these advanced light helicopters are secure, and now they can carry out their operation. This is a 5.5 ton twin engine multi-role helicopter that has been developed indigenously by Hindustan Aeronautics Limited. Next is international affairs students. United States of America has approved $131 million foreign military sale to India for Indo-Pacific marine safety. Right? This $131 million, this is close to 1090 crore rupees in Indian terms, right? And this FMS, what is this FMS? FMS is your foreign military sale, right? So remember, this foreign military sale agreement, it finds, or it is basically under a broader framework of various Indo-Pacific marine domain awareness program, right? And what this will do is this will strengthen India and USA's role. And right now also that we are seeing that we are getting little trouble from Pakistan, right, in terms of terrorists. So this helicopter's clearance at this time will be beneficial for India, right? And this amount will be very beneficial for India, correct? As we will be equipped with new technology, new helicopters, new equipments that will be beneficial for us, right? Because we discussed about this helicopter also, it has also got clearance now, and now we are seeing that we are getting sale to India, right? That we are getting sale of these maritime security equipments for India. Next is, and these are the equipments that you can see that will be accessed, right? That are the part of this framework. Moving on, banking and finance students, RBI has released a report and it stated that India's total exports grew by 6.01% to reach $824.9 billion in FY25. Correct? So recently it is RBI, they have released a report. The name of the report is Data on Service Trade for March 2025. As per this report, India's export of goods and services reached all-time high of $824.9 billion in FY25 from their previous estimate of $820.93 billion. Correct? And this is an increase of 6.01% compared to last FY24. If we talk about RBI, who is the governor here? Sanjay Malhotra, right? Headquartered in Mumbai, Maharashtra. And one more thing, remember, this data also showcase that the merchandise export, excluding petroleum products, has increased a record high, correct, after growth of 6%. Next is economy and business. S&P Global Rating has cut the India's FY26 GDP growth forecast to 6.3%. So it is S&P Global Rating that has released this report, right? And it is about the global macro update. Seismic shift in US trade policy will slow world growth. That we are seeing that USA has imposed tariffs on multiple countries, and because of which we are seeing that there has been, because of this, the global growth is suffering, right? And it is also said that there's a high chance that we can also face recession in the coming time period, correct? So coming back, so S&P Global Rating, they have cut the GDP growth forecast for India's FY26 to be around 6.3%, right? And for FY27, we are projected to grow by 6.5%, right? This is because of the exchange rate projections that we are seeing. Right now currency has breached 88 mark, then it came down to almost 85, 86, then because of various global economic outlook and also the impact of US tariff policies. If we talk about IMF, International Monetary Fund, they are projecting India to grow by 6.2%.
World Bank, they are projecting India to grow by 6.3%. And RBI, we are projecting to grow by 6.5%. Next is awards and recognition. AIFF Award 24-25 were presented recently, and Subhashish Bose and Soumya Guglot has won the India's top footballer honors. Right, take a note of this. Correct. So Subhashish Bose, as you can see him on the left here, right, he's a defender from West Bengal. Correct. He belongs to which team, or he plays for which club? It is Mohun Bagan Supergiant, right? And he became the first player from West Bengal to win the title, right? That is the AIFF Men's Footballer of the Year for FY25. Correct. Take a note of this. And if we talk about the women's category, who is in the women's category? Soumya Guglot, right? In the as the AIFF Women's Footballer of the Year for FY25. Correct. So both men and women. Then apart from this, remember Bryson Juan Fernandez, the midfielder of FC Goa, was awarded the AIFF Promising Men Player of the Year. And similarly, Toijam Chanu became the first centre back to win the AIFF Promising Women Player of the Year award. And AIFF is your All India Football Federation, headquartered in New Delhi. President is Kalyan Chaube. Next is Kerala's Kozhikode gets the World Health Organization recognition as age-friendly city. Take a note of this. What does this age-friendly means here, right? What does this means? This means that Kerala has implemented several age-related or age-friendly policies that helps in daycare centers, right? Various safe spaces for the elderly engagement, correct? All these things has been established in Kerala that has helped the general population there, the senior population there, at living a better life. Correct. So Kerala's Kozhikode gets the WHO's recognition as the age-friendly city. Correct. That is for senior citizen. WHO World Health Organization, headquartered in Geneva, Switzerland, established in 1948. Dr. Tedros Ghebreyesus is the current Director General here. Next is appointments and resignation. Ganeshwar Kumar Singh appointed as the Director General and Chief Executive Officer of IICA. IICA is your Indian Institute of Corporate Affairs. This is a think tank under the Ministry of Corporate Affairs. Correct. So he has been appointed as the Director General. He will be succeeding whom? Dr. Ajay Bhushan Prasad Pandey. Next is ECI has appointed Rakesh Verma as the Director General of IIIDEM and Ashish Goel as the Director General of Media. I repeat, Election Commission of India appointed 2 senior officers to key leadership roles. These appointments aims to strengthen the administrative and media related functions of the ECI, that is Election Commission of India. Here Rakesh Verma, a 1993 batch IAS officer from Punjab cadre, assumed the charge as the Director General of Indian International Institute of Democracy and Election Management, the headquarters of which is in New Delhi. Then apart from this, Ashish Goel, a 1996 batch IIS officer, that is your Indian Information Service officer, took charge as the Director General of Media. Right, that is in ECI only. Next is Sanjay Khanna has assumed the additional charge as the Chairman and Managing Director of BPCL. What is BPCL? It is your Bharat Petroleum Corporation Limited. Right, this is a Fortune Global 500 company that comes under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, and they have announced that Sanjay Khanna, currently serving as the director, has assumed additional charge as the Chairman and Managing Director of BPCL, and he will be succeeding G. Krishna Kumar here. Next is various CCI approval, students. CCI, right, first approval is of KKR's acquisition of controlling stake in Healthcare Global Enterprise Limited through Hector Asia's holding, right, and Kia EBT2 schemes. First thing this. Second is Jubilant Bharat Group's acquisition of a 40% stake in what? In Hindustan Coca-Cola Holdings Private Limited. Take a note of this also. These are 2 things you need to remember. Then moving on to obituary, students, former national shooting coach and Dronacharya awardee Professor Sunny Thomas has recently passed away at the age of 83 in Kottayam district, Kerala. Born in 1941 in Kottayam, Kerala. And 2001, Professor Sunny Thomas became the first shooting coach to be honored with the Dronacharya award, that is India's prestigious recognition for excellence in sports coaching. Moving on, next is former Union Minister Giriraj Vyas has recently passed away at the age of 79 in Ahmedabad, Gujarat, born in 1946 in Rajasthan.
Next is World Press Freedom Day, students, observed on 3rd of March. This day is observed to signify the press freedom and the safety of the journalists globally. This year it was the 32nd edition of the World Press Freedom Day that was observed, and there is a theme here, students, that is reporting in the brave new world, the impact of artificial intelligence on press freedom and media. First time this day was observed in 1994. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part, and then we'll be proceeding to the homework section. Next, to tackle skilling challenges, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship co-hosted a high-level roundtable in April with which international organization to launch the India Skills Accelerative initiative. It was with World Economic Forum, right? So this initiative, it will bridge the skilling gap and across various sectors by collaboration. Correct? Take a note of this. And they have launched this India Skill Accelerator that will be focusing on providing what? Skills. Next, in April, Union Minister Ram Mohan Naidu inaugurated a state-of-the-art lab at Aircraft Accident Investigation Bureau that is focused on analyzing the crucial aviation tools. These tools, they include your digital flight data recorder and a cockpit voice recorder. So these two things are important, right? This lab, correct? This digital flight data recorder, correct? This is also basically a lab, that is your black box lab, that will be recording all the technicalities, all the status of the aircraft. Correct? So coming back, Ram Mohan Naidu ji inaugurated this state of the art lab, that is a black box lab, that is at the Aircraft Accident Investigation Bureau, that is focused on the aviation tools such as your digital flight data recorder. That means the data of the flight will be recorded here. Also the cockpit voice recorder, that what the pilots are talking there, right, that will be recorded, because the pilots should be very mature, right? They should have the skills to do maneuvers whenever needed. Next, the Ministry of Port Shipping and Waterways launched a dedicated digital portal in April to facilitate ease of doing business and promote private sector participation. What is the name of that organization that developed this portal? This portal has been developed by whom? Ministry of Port Shipping and Waterways. So what is the portal? It is Inland Waterways Authority of India, right? So this is the organization, they have developed this portal. What this will do is, this will promote ease of doing business, all the certification, all the permissions that are required in order to make trade through the port will be granted on this particular portal. Next, where was the India's first Himalayan high altitude atmospheric and climate research center inaugurated by Ministry of Science and Technology in April? So where was it? It was in Jammu and Kashmir. Correct? Take a note of this. This center will focus on climate forecasting, aerosol studies and cloud microphysics. Also, it will be focusing on the weather patterns. And this center is located at a 2250 meters height. Next, who received the final authorization to operate as an online payment aggregator from RBI in April 2025? It is Bharat Pay Resilient Payment System. They received the authorization from RBI to act as a payment aggregator, and they will be operating as a payment aggregator platform under the name Bharat Pay X. Next, in April, Idukki district earned the green tag after successful waste management efforts under the Malinya Muktam Navakram campaign. I repeat, Malinya Muktam Navakaralam campaign, right? Question asked here is that this Idukki district belongs to which state? So Idukki, as we all know, it belongs to Kerala, and they have earned the green tag after successful management of this waste management efforts. Right? This achievement was made possible through the joint efforts of the local bodies, businesses, schools, colleges and other offices where they collaborated and made this possible. Next, identify the state in India whose indigenous textile, rendia, silk and khasi handloom products were granted the GI tag recently. So these two products, they belong from Meghalaya, that got the GI tag recently. This rendia, right? It is the khasi name for Eri silk. Next is mention the organization that collaborated with the Cotton Association of India in April to boost bilateral cotton trade and enhance the cooperation in cotton production, trade trends, pricing and market insights. So which is that organization? It is Australian Cotton Shippers Association, right? So remember, Mumbai, Maharashtra based Cotton Association of India and Australian based Australian Cotton Shippers Association, they signed an MOU where they will be working on enhancing the bilateral trade in cotton between these two countries. Cotton is grown on the black soil,
that is also known as the Ragur soil. Next, which of the following airport is not in the list of the top 5 airports announced at the Skytrax World Airport Awards 2025 held in Mumbai, in Madrid, Spain? So, which of the following airport is not among the top 5? It is Hong Kong International Airport is not among the top 5. Singapore's Changi Airport secured the first position in this index. Take a note of this. Next, Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan headed India's delegation to the 2025 Agriculture Ministers Meet of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, that is BIMSTEC. This meeting was held where? It was held in Nepal. Right? Take a note of this. Moving on, next, which country became the first African nation and the fourth country globally to sign a country partnership framework with International Solar Alliance in Nepal? And this is the fourth country. Before this, which are those? It is your Bangladesh, Bhutan and Cuba, and now it is Mauritius that became the fourth country and the first African nation to sign the country partnership framework with International Solar Alliance. Next, in April, which country signed the Artemis Accord, that is a set of the non-binding agreements established by NASA to cooperate, or basically to cooperative civil exploration of the outer space? What is this Artemis Accord? Artemis Accord states that space should be explored peacefully by all the nations, right? So this is for peaceful exploration of space. So which country recently signed the Artemis Accord? It was signed by Bangladesh. Next, who is the chairperson of a 6-member high-level committee constituted by SEBI in April to review the provisions for officials to disclose any conflicts of interest? So, who is the chairperson here? Pratyush Sinha. He is the chairperson of the 6-member high-level committee, right? And it was instituted, or it was established by SEBI, correct? And it is for officials so that they disclose any conflicts of interest. They will be submitting their report within the 3 months of the constitution of this committee. Next, General Khamti Sifadon, the president of Daesh, passed away at the age of 102. So he was the president of Lao People's Democratic Republic who recently passed away. Next, which state or union territory inaugurated the Apricot Blossom Festival on 10th of April with the aim of promoting tourism and cultural heritage? So, which is that state, which is the state or union territory that recently inaugurated this Apricot Blossom Festival? It is Ladakh. Take a note of this. Next is the Ministry of Information and Broadcasting partnered with Maharashtra Film, Stage and Cultural Development Corporation Limited to establish India's first institute that is dedicated to animation, visual effects, gaming, comics and extended reality. So this name that institute that is said to be established at the Dadasaheb Phalke Film City in Goregaon, Mumbai. So what is the name of that institute? It is Indian Institute of Creative Technologies. Take a note of this, students. With the coming of AI, these creative things have become more advanced. Now a person can use these technologies and enhance their working on these technologies or on these creative side, right? Because making content has now become very easy, and if you know the right tools, you can scale it to very large portion. Next, the Ministry of Education announced a dash hike in the material cost under the Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman scheme, that is your Poshan scheme, that is also known as the midday meal scheme. So how much percent hike has been seen in the procurement of the materials such as your pulses, rice, lentils and so on? It is 9.5% hike has been seen here. Next, which country co-hosted the inaugural edition of Aikimis exercise with India in April 2025? So which country is it? It is Tanzania, and India co-hosted this Aikimi exercise. Next, one more thing remember here, from Indian side it is INS Chennai and INS Kesari that took part in this exercise. This was a 6-day long exercise. Next, name the long-range glide bomb successfully tested by DRDO using the Sukhoi 30 Mark 1 fighter aircraft in April 2025. So name of this long-range glide bomb is Gaurav. Next, Padma awardee Kumudini Lakhia, who passed away in April, was a renowned she was a renowned Kathak dancer who recently passed away. She was honored with Padma Vibhushan in January 2025. Next,
is when is the United Nations International Day of Human Space Flight observed annually to celebrate the beginning of space era for mankind and highlight the role of space science and technology in promoting the sustainable development goals. So UN International Day of Human Space Flight is observed on 12th of April, right? And since 2011 we are observing this. So first edition was observed in 2011. Next is which company achieved a significant milestone by constructing the world's first 3D printed train station, assembling the entire station in under 6 hours, replacing a wooden facility dating back to 1948. So which company achieved this significant milestone by constructing the world's first 3D printed train station? It is West Japan Railway Company. Take a note of this, important. And it was Japan only, if you remember, they developed the world's first wooden satellite also. Can you name that satellite? It is a few months back question, but do name it, right? This is your homework. Moving on. Next, to which country hosted the 8th meeting of the Joint Committee on Asia-India Trade in Goods Agreement that concluded on 14th of April. So it is our country India that hosted the 8th meeting of the Joint Committee on Asian-India Trade in Goods Agreement. Next is during the official 2-day visit of Italian Deputy Prime Minister Antonio Tajani to India from 11 to 12th of April, India and Italy, they signed a memorandum of understanding to strengthen the cooperation in which field? This was to strengthen the cooperation in the field of science and technology. Next, under the umbrella of the new scheme of petrochemicals, the scheme for setting up plastic parks is being implemented by Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers of Government of India. Question asked is this: how many such plastic parks have been approved across different states in India that will be established here, that will promote research and development? So a total of 10 such plastic parks has been approved here. Next, identify the organization that introduced a new category called Blue Category for industries based on essential environment services in April with the aim of managing pollution caused by anthropogenic activities. So, which is that organization that introduced this new category? It is Central Pollution Control Board, and this blue category will be provided to, or this certification will be provided to a industry for 2 years, and they will be monitoring that whether the pollution level is increasing or decreasing. If it is increasing, their certification will be revoked, and if they are not polluting and they are on a right track, then they will be continuing with this certification. With this certification, many investors, right, if the company is having the right certification here, this blue certification, this will enhance their funding also, right? That means more and more investors and VCs will be investing there based on this. Next, in April, Daniel Roy Gilchrist Nouba Azin was re-elected as the president of which country for a period of 4 years? So, elected by of Ecuador. Next, who has been elected as the new president of Gabon in April? Brice Clotaire Oligui Nguema was elected as the new president of Gabon. Next is mention the state where DRDO successfully conducted the field trial of the land version of vehicle mounted Mark 2A laser directed energy weapon. It is Andhra Pradesh, right? This is the state where DRDO, they successfully conducted the field trial of this land version of vehicle mounted Mark II laser directed energy weapon. Next, pop star Katy Perry, right? She was one of the 5 and one of the 6 women, total 6 women went into space recently, right? They used the New Shepard rocket. Name that company that took them into space. It is Blue Origin, right? And this New Shepard mission is also of Blue Origin only. Next, the Peruvian Nobel Prize winner Mario Vargas Llosa passed away at the age of 89 in Peru. He was awarded with the Nobel Prize in 2020. So he was honored with Nobel Prize in the field of literature in 2010, not 2020, in 2010, who recently passed away. Next, on the occasion of the World Quantum Day observed on 14th of April. Next, students, is our homework section. First question is, which is the world's strongest insurance brand? World's strongest insurance brand. Tell me the first 3, first, second and third. Second question, tell me recently which Indian naval ship will be participating in the Mauritius National Day celebrations for 2025. Then third question, tell me recently
Which organization takes over the Singapore fintech giant slash payments cost by 40%? Fourth question, tell me recently a internship scheme was launched for our students, right? Tell me the name of that internship launched by the government of India and the details regarding surrounding it. Then fifth question, tell me recently who has been appointed or who will be becoming, or apart from this, tell me who has been appointed as the new chief executive officer and new president of Honda cars, right? So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, हाउ कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 4 और 5 मई के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आज की वीडियो में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये अभी विजिट पे थे महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश की। कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किए, उसको डिस्कस करेंगे। देन अभी रिसेंटली 69th ईडी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। देन एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए इंडिया में कुछ स्टेप्स लिए गए, उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो हमें, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ। एंड स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखा करो, ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं आपकी लर्निंग के लिए। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने विजिट किया महाराष्ट्र, केरला एंड आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र में इन्होंने सबसे पहले जाके इनॉग्रेट किया वेव्स को, राइट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव वेव्स 2025। ये एक 4 डे की समिट है जो कि कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज के ऊपर काम कर रही है, इस टैगलाइन के ऊपर। एंड यहाँ पे जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसकी लोकेशन थी जहाँ पे ये इवेंट हमें होता हुआ दिखा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा मिलकर यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया था। फिर इसी के अलावा दूसरी चीज़ याद रखेंगे, तो गई फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ याद रखेंगे विनहिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज़ सी पोर्ट यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, ये डेडिकेट किया गया, राइट। किसको दिया गया, ये कहाँ पर? त्रिवेंद्रम, केरला को ये डेडिकेट किया गया ये सी पोर्ट, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। 8,867 करोड़ रुपीस तक की लागत से ये पोर्ट यहाँ पे बनाया गया है। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे तीसरी है मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती में, क्योंकि हम वहाँ जानते हैं अमरावती को ग्रीन सिटी बनाया जा रहा है। वर्थ 58,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट के इनॉग्रेट किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज त्रिपाठी। इन्होंने लीड किया 69th ईडी फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन में इन न्यू दिल्ली। देखो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, राइट, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है उनका ये ध्यान रखते हैं, एंड काफ़ी एक्शंस भी रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। करेक्ट, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से हम देखें तो एक एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी फॉर FY25। यहाँ पे 23 ऑफिसर्स एंड जोनल यूनिट्स को ऑनर किया गया था फॉर देयर परफॉर्मेंस। एंड इसी के दौरान हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 5,113 प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन्वेस्टिगेशंस इनके द्वारा की गई, ऑलमोस्ट 500 केसेस पर डे के हिसाब से 2014 से 2024 के बीच में देखें, राइट। एंड 15,261 करोड़ रुपये तक का पैसा भी जो विक्टिम्स हैं उनको यहाँ पे रिटर्न किया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं नीति आयोग। इन्होंने रिलीज़ की एक रिपोर्ट ऑन एनहेंसिंग MSME कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया।
देखो, इंडिया में एमएसएमईज अगर ग्रो करेंगे ना, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हुई दिखेंगी, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकेंगे, राइट। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया एंड यूएसए के द्वारा यहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एमएसएमईज को ग्रो करने का काम किया जा रहा है इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे। इनको वेरियस इंस्टीट्यूट से फाइनेंसिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है ताकि अपने बिजनेस ऑपरेशन को कैरी आउट कर सके। लोन की ज़रूरत पड़े तो लोन इनको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक। तो ये एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई जो बताती है कि 2024-20 से 24 के परसेंट में अगर हम देखें, एमएसएमई का जो क्रेडिट एक्सेस है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखा है, 14 से 20% होता हुआ दिखा है, राइट। बहुत ज़ोरों शोरों से अगर हम बताएं तो यहाँ पे एमएसएमईज को ग्रो करने का काम किया जा रहा है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, इन्होंने लॉन्च किए की इनिशिएटिव्स फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को इस टॉपिक में लगी वो है कि अभी 5 नए सीनियर सिटीजन्स होम इस्टेब्लिश किए गए हैं। कहाँ कहाँ पर, ये जगह आपको पता होनी चाहिए, तावंग में अरुणाचल प्रदेश में, वोखा में इन नागालैंड, वेल्लोर इन तमिलनाडु, अनक्कापल्ली इन आंध्र प्रदेश एंड नैनीताल इन उत्तराखंड। तो ये 5 आपके सीनियर सिटीजन्स होम्स यहाँ पर अभी वर्चुअली इनॉग्रेट किए गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। इसके अलावा याद रखेंगे एक सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। मतलब ये एक वेबसाइट रहेगी जहाँ पे जो स्कीम्स आ रही हैं, जो गाइडलाइंस आ रही हैं, राइट, जो नई इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यहाँ से सीनियर सिटीजन्स यहाँ से ले सकेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टूडेंट्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रतापराव जाधव जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया योगा महोत्सव को महाराष्ट्र में एंड लॉन्च किया योगा संगम पोर्टल को, राइट। अभी हम देखेंगे योगा इंटरनेशनल योगा डे, या फिर हम बोले इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्जर्व किया जाएगा 21 जून को, राइट। एंड यहीं पे याद रखेंगे मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन दोनों ने मिलकर योगा महोत्सव को यहाँ पे सेलिब्रेट करने की बात की गई। ये पंचवटी नासिक महाराष्ट्र में हुआ था एंड इसी के दौरान ये योगा संगम पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इंडिया एंड डेनमार्क, इन्होंने रिन्यू किया एनर्जी कोऑपरेशन पैक्ट को ताकि बूस्ट मिल सके नेट ज़ीरो एमिशंस को। देखो, आज के टाइम पे अगर कोई नई कंपनी भी आ रही है ना, या फिर किसी पुरानी कंपनी को फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, तो फाइनेंस भी पैसा उन्हीं को मिल रहा है जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो, राइट, जो कि इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना कर रहे हो ज़्यादा, राइट। तो ऐसे टाइम पे नेट ज़ीरो एमिशंस प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है एंड इसी को बूस्ट के लिए यहाँ पे इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में ये एनर्जी कोऑपरेशन रिन्यू किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम, इन्होंने कॉर्पोरेट भवन को इनॉग्रेट किया कोलकाता वेस्ट बंगाल में, इसको इनॉग्रेट किया गया है, राइट। एंड इस स्कीम के अंडर इसके होगा क्या, कॉर्पोरेट भवन के अंडर बेसिकली जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ये एक तो 7 स्टोरी बिल्डिंग है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज इसके अंडर आ जाएंगे एंड यहाँ पे 21 से लेके 24 साल तक के जो बच्चे हैं, एलिजिबल यूथ हैं, उनको इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड करती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने अनवेल किया स्टैचू एंड रीनेम्ड अ रोड टू ऑनर बोडोफा, राइट। आई रिपीट, अमित शाह आर होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने अनवेल किया स्टैचू एंड रीनेमिंग ऑफ रोड एंड रोटरी ट्री एज ए ट्रिब्यूट टू द बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा इन न्यू दिल्ली ऑन हिज 35th डेथ एनिवर्सरी, राइट। एंड इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, हिमंता बिश्वा शर्मा जी, एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रेखा गुप्ता, राइट, ये यहाँ पर इस प्रेजेंस में थी इस इवेंट के, राइट। एंड यहीं पे 2 चीज़ें हुई हैं, पहली तो स्टैचू अनवेल किया गया जो अभी हमने देखा, दूसरा है रीनेमिंग किसकी हुई है, राइट। इस रोड को रीनेम करके क्या कर दिया गया है, जो कि लाला लाजपत राय रोड था साउथ दिल्ली में, उसको रीनेम करके कर दिया है बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मार्ग। एंड ये जो स्टैचू है ये बेसिकली एक सिंबल भी है सेल्फ रिस्पेक्ट का। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, इनको क्लियरेंस मिल गई है फॉर ऑपरेशंस आफ्टर सेफ्टी रिव्यू। मतलब इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ध्रुव, राइट, इनको यहाँ पे क्लियरेंस मिल गई है फॉर वेरियस ऑपरेशंस आफ्टर सेफ्टी रिव्यू। इनका सेफ्टी रिव्यू किया गया, राइट, इन पे काफ़ी सारे चेक्स किए गए एंड इसके बाद बताया गया कि हेलीकॉप्टर इज़ गुड टू गो फॉर ऑपरेशंस एंड ये अपना वर्क में लाया जा सकता है। एंड 340 से भी ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पे अभी तक मैन्युफैक्चर किया जा चुका है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए द्वारा, ये इंडिजीनियसली बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स, यूएसए ने अप्रूव किया $131 मिलियन का फॉरेन मिलिट्री सेल टू इंडिया फॉर इंडो पैसिफिक मरीन सेफ्टी। अब देखो, हम जानते हैं इंडिया की थोड़ी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, राइट, एंड
काफ़ी टेंशन्स बढ़ गए हैं। तो ऐसे में इंडिया के लिए अपना मैरीटाइम सिक्योरिटी सेक्टर भी सिक्योर करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। एंड उसके लिए यहाँ पे हमने देखा यूएस ने अप्रूव किया कि आप 131 मिलियन के फॉरेन मिलिट्री सेल कि आप इतने अमाउंट का हमसे मैरीटाइम सिक्योरिटी के कुछ भी इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, जो कि है 1090 करोड़ रुपए तक। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आप वो देख सकते हैं कुछ ये चीज़ें यहाँ पे एक्वायर भी की जाएंगी। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आते हैं। अभी आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया है इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स ग्रो कर गया बाय 6.01% टू रीच $824.9 बिलियन इन FY25, राइट। तो हमारा जो ट्रेड है यहाँ पे जो टोटल एक्सपोर्ट है वो ग्रो होता हुआ दिखा, करेक्ट। एंड ये आपकी रिपोर्ट है डाटा ऑन सर्विसेज फॉर ट्रेड मार्च 2025, राइट। तो जो यहाँ पे इंडिया का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ये ऑल टाइम हाई पे था, 6% से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। एंड ये आपका 6.01% अगर हम एग्जैक्ट देखें, ठीक है। ऑल्सो अगर हम बात करें जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है एक्सक्लूडिंग द पेट्रोलियम, वो भी रिकॉर्ड हाई पे था, $374.1 बिलियन इन FY25। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इकोनॉमी एंड बिजनेस पे। S&P ग्लोबल रेटिंग्स, इन्होंने इंडिया की जो FY26 की जीडीपी प्रोजेक्शन है उसको 6.3% कर दिया है, राइट। पहले ये 6.5% प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब 6.3% प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसी के अलावा अगर हम देखें जी रीज़न क्या है, ऐसा क्यों डाउनफॉल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक तो यूएसए ने यूएसए के जो टैरिफ्स लग गए हैं, इतनी सारी पॉलिसीज आ गई हैं। देन एक्सचेंज रेट जो है इंडिया के इंडियन रुपीज़ का, पहले आप देखा 88 टच कर गया, वापस 85 तक आ गया, तो कुछ ये फ्लक्चुएशन की वजह से। एंड जो इकोनॉमिक आउटलुक एज अ होल हमें देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोजेक्ट कर रही हैं देयर कैन बी अ रिसेशन अहेड। एंड इसीलिए आप गोल्ड का भी प्राइस देख रहे हैं वो बहुत बढ़ता जा रहा है। एस्टिमेटेड है कि जो गोल्ड की वैल्यू है आने वाले टाइम में, राइट, जो बाहर के लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि $7,000 से लेके $10,000 तक ये गोल्ड जा सकता है, जो कि अराउंड ऑलमोस्ट अभी $3,000 से भी कुछ नीचे चल रहा है, राइट। तो आप जंप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जंप देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। AIFF अवार्ड्स की बात करेंगे। सो सुभाषिस बोस एंड सौम्या गुगलोथ, राइट, इनको AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर मैन एंड वीमेंस यहाँ घोषित किया गया, राइट। सुभाषिस बोस याद रखेंगे, ये आपका मोहन बगान सुपर जायंट टीम से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। एंड ये पहले प्लेयर बने फ्रॉम वेस्ट बंगाल जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया इससे। इनके अलावा भी कुछ प्लेयर्स याद रखेंगे, जैसे ब्रिसॉन फर्नांडिस, ये मिडफील्डर हैं FC गोवा के, इनको AIFF प्रॉमिसिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर से घोषित किया गया। एंड तोइजम चानू, ही बिकेम द फर्स्ट सेंटर बैक एवर टू विन द AIFF प्रॉमिसिंग वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। शी बिकेम द first ever to center back to win this AIFF promising women's player of the year. Moving on, next is Kerala's Kozhikode get the WHO certification as age friendly city. देखो एज फ्रेंडली सिटी क्या है कि इस सिटी के द्वारा सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, घर लॉन्च किए गए हैं, हेल्थ केयर स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, राइट। इनकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए कई सारी यहाँ पे अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, करेक्ट। इसीलिए यहाँ पे केरला के कोझिकोडे को WHO रिकॉग्निशन मिला फॉर एज फ्रेंडली सिटी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे आ जाते हैं। ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ IICA, जो कि है इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस, राइट। एंड ये किसके अपॉइंट किए गए हैं, IICA के, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। तो ज्ञानेश्वर कुमार, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल एंड CEO ऑफ IICA, राइट, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इन्हीं की जगह अगर मैं पूछूं ये सक्सीड किनको करेंगे, तो ये सक्सीड करेंगे किनको, डॉक्टर अजय भूषण प्रसाद पांडे। नेक्स्ट आ जाते हैं, ECI ने अपॉइंट किया राकेश वर्मा को एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ IIIDEM एंड आशीष गोयल को एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मीडिया इन ECI क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। तो इनमें राकेश वर्मा, जो कि एक 1993 बैच IAS ऑफिसर है, राइट, इनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है IIIDEM। ये क्या है, इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। एंड आशीष गोयल जी को यहाँ पे मीडिया का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया इन ECI। नेक्स्ट, संजय खन्ना, इन्होंने अज्यूम किया एडिशनल चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BPCL क्या है आपका, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड ये सक्सीड करेंगे G कृष्ण कुमार जी को। नेक्स्ट, एक्विजिशंस एंड मर्जर्स की बात करें, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं KKR का यहाँ पे हमें एक्विजिशन होता हुआ दिखा,
KKR's acquisition of a controlling stake in Healthcare Care Global Enterprise Limited through Hector Asia Holding. एंड दूसरा याद रखेंगे जुबलिएंट भारतीय ग्रुप का, इन्होंने एक्वायर किया है 40% स्टेक इन हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग प्राइवेट्स लिमिटेड में। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिटरी के ऊपर। फॉर्मर नेशनल शूटिंग कोच एंड द्रोणाचार्य अवार्डी प्रोफेसर सनी थॉमस, इनका रिसेंटली निधन हो गया 83 की एज में इन कोट्टयम केरला। एंड 1941 में कोट्टयम केरला में इनका जन्म हुआ था एंड 2001 में ये पहले शूटिंग कोच बन गए थे जिनको ऑनर किया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड से, जो कि इंडिया का प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन है फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर गिरिराज व्यास, इनका रिसेंटली निधन हो गया 79 की एज में, राइट। इनका पॉलिटिकल करियर 1977 में शुरू हुआ था एज द उदयपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है प्रेस की फ्रीडम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। एंड जो जर्नलिस्ट एंड प्रेस की एक्चुअल में जो फ्रीडम होती है, राइट, उनके जो राइट्स होते हैं उनको यहाँ पे लाने के लिए एग्जीक्यूशन में ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 32nd एनिवर्सरी डे की ऑब्जर्व की गई, राइट। एंड इसकी थीम है रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया। पहली बार इस डे को 1994 में ऑब्जर्व किया गया था। एक और चीज़ यहाँ याद रखेंगे, अगर हम बात करें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज़ किया गया। 180 कंट्रीज़ का ये डाटा होता है जिसमें से इंडिया की रैंक रहेगी 151st एंड नॉर्वे इन्होंने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे सिक्योर करी। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एंड देन विल प्रोसीड टू होमवर्क सेक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी टू बूस्ट द निवेशक दीदी फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव, जिन्होंने एक MOA मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया इन अप्रैल 2025। किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया? IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स के साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट आ जाते हैं टू टैकल स्किलिंग चैलेंजेस द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने को होस्ट किया एक हाई लेवल राउंड टेबल इन अप्रैल विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च द इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर इनिशिएटिव। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ताकि इंडियंस को स्किल करने में यहाँ पे मदद की जा सके नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है। नेक्स्ट, इन अप्रैल यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इन्होंने इनॉग्रेट किया स्टेट ऑफ द आर्ट लैब को एट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसका फोकस रहेगा कि इन एनालाइजिंग क्रूशियल एविएशन टूल्स जैसे डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को। और ये जो लैब है ना, बेसिकली ये आपका एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करेगी, ब्लैक बॉक्स लैब की तरह। 9 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से इसको इस्टेब्लिश किया गया है, राइट। एंड जो भी क्रैश के टाइम पे, एक्सीडेंट्स के टाइम पे जो भी फॉल्ट्स हो सकती हैं उनको बेटर किया जा सके एंड फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम रिपीट ना हो सके, इसीलिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने लॉन्च किया एक डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल इन अप्रैल टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने डेवलप किया इस पोर्टल को? तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, IWAI के द्वारा। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्रैल में? तो जम्मू एंड कश्मीर। Next, who received the final authorization to operate as a online payment aggregator from RBI in April 2025? तो वो है भारत पे रेजिलियंट पेमेंट सिस्टम एंड भारत पे एक्स, ये वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके अंडर भारत पे यहाँ पे ऑपरेट करेगा एज ए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट, इन अप्रैल इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इन्होंने अर्न किया एक ग्रीन टैग आफ्टर सक्सेसफुल वेस्ट मैनेजमेंट एफर्ट्स अंडर द मालिन्य मुक्तम नवा केरलम कैंपेन। ये इडुक्की कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? देखो, केरलम, तो ये केरला से बिलोंग करता है, करेक्ट। ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में था। यहाँ पे बेसिकली क्या था, जॉइंट एफर्ट से, लोकल बॉडीज़ के एफर्ट से, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, कंपनीज़ के एफर्ट से यहाँ पे कैंपेन लॉन्च किया गया था कि हम वेस्ट वाटर को या फिर वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करेंगे एंड सस्टेनेबली उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट इन इंडिया हुज इंडिजीनियस टेक्सटाइल रेंडर सिल्क एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स जिनको भी GI टैग मिला। तो ये रेंडर सिल्क, इसको एरी सिल्क के नाम से भी जानते हैं, राइट। एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, इनको GI टैग मिला, ये दोनों मेघालय से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ इन अप्रैल 2025 टू बूस्ट बायलैटरल कॉटन ट्रेड एंड एनहांस कॉपरेशन इन कॉटन प्रोडक्शन, ट्रेड ट्रेंड्स, प्राइसिंग एंड मार्केट इनसाइट्स। तो ये रहेगा ऑस्ट्रेलियन कॉटन शिपर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट,
Which of the following airport is not among the top 5 airports announced at the Skytrax World Airports Award 2025 जो कि मैड्रिड स्पेन में हुआ था। तो इनमें से टॉप 5 में कौन सा है? हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप 5 में नहीं आता है। सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट फर्स्ट पे, दोहा एयरपोर्ट कतर का सेकंड, टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट थर्ड पे, सियोल का इंचियोन एयरपोर्ट फोर्थ पे एंड टोक्यो का नरेता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान में ये 5th पोजीशन पे। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने हेड किया इंडिया का डेलीगेशन टू द 2025 का एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक। राइट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये मीटिंग हुई कहाँ पे थी? तो ये मीटिंग नेपाल में हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट, किस कंट्री वो पहली अफ्रीकन नेशन बन गई एंड चौथी कंट्री करेक्ट जिन्होंने साइन किया एक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो बांग्लादेश वो कंट्री बन गया है, राइट या फिर हम बोले मॉरिशस, नॉट बांग्लादेश, मॉरिशस वो कंट्री बन गया है जो कि पहला अफ्रीकन नेशन एंड 4th नेशन बना जिन्होंने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया आईएसए के साथ। इससे पहले अगर हम देखें बांग्लादेश, भूटान एंड क्यूबा ये ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। बांग्लादेश से बात करें तो बांग्लादेश वो कंट्री बन गया जिन्होंने अभी आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? बेसिकली नासा ने लॉन्च किया था कि हम स्पेस का पीसफुल एक्सप्लोरेशन करेंगे। जो जो कंट्रीज इसको साइन करेंगे वो अग्री करती हैं सर्टेन गाइडलाइंस को एंड प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, जो कि स्पेस में फॉलो किए जाएंगे फॉर पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। नेक्स्ट, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ अ 6-member हाई लेवल कमेटी जो कि सेबी के द्वारा स्टैब्लिश की गई फॉर रिव्यूइंग द प्रोविजंस फॉर ऑफिशियल्स टू डिस्क्लोज एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? राइट, तो कौन है उस 6-member कमेटी के चेयरपर्सन? वो है प्रत्युष सिन्हा एंड आप ये देखेंगे विद इन 3 months आप इस कमेटी को अपनी यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, जनरल KS खामती शिफादौन, ये प्रेसिडेंट है किस कंट्री के जिनका रिसेंटली निधन हो गया 102 की एज में? तो ये लाओ PDR, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ये प्रेसिडेंट है जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने इनॉग्रेट किया है एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल को 10 अप्रैल को विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज? तो वो लद्दाख रहेगी। राइट, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने पार्टनर किया महाराष्ट्र फिल्म स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ताकि इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि डेडिकेटेड है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, AR VR फैसिलिटीज़ के ऊपर। ये जो इंस्टीट्यूट है ये दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी गोरेगांव मुंबई में रहेगा। आपसे पूछा जा रहा है उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ, नेम दैट इंस्टीट्यूट, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन A। नेक्स्ट, इन अप्रैल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्होंने अनाउंस किया कितने % का हाइक फॉर द मटेरियल्स जो यूज़ किए जाएंगे मिड डे मील स्कीम के अंडर जो कि है PM पोषण स्कीम? तो 9.5% का यहाँ पे हाइक देखने को मिला है उन प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने को होस्ट किया इनॉग्रल एडिशन ऑफ AI किमे फेस्टिवल? ये AI किमी ये एक बेसिकली आपका अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज है। इंडिया एंड किस कंट्री के द्वारा मिलकर इस एक्सरसाइज को कराया गया? तंजानिया के द्वारा कराया गया। इस बार तंजानिया में हमें देखने को मिली थी। INS चेन्नई एंड INS केसरी, इन दोनों का पार्टिसिपेशन इस एक्सरसाइज में देखने को मिला था। नेक्स्ट, नेम द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसने सक्सेसफुली टेस्ट किया DRDO को यूजिंग सुकोई 30 Mark 1 फाइटर एयरक्राफ्ट इन अप्रैल 2025? तो गौरव उसका नाम रहेगा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का। नेक्स्ट है पद्मा अवॉर्डी कुमुदिनी लाखिया जिसका निधन हो गया अप्रैल में। राइट, ये कौन थी? तो पद्मा अवॉर्डी कुमुदिनी लाखिया जी ये कथक डांसर थी जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया एंड इनको जनवरी 2025 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्माश्री से 1987 में एंड पद्मा भूषण से 2010 में। नेक्स्ट, व्हेन इज UN इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व्ड? ताकि जो स्पेस का एरा स्टार्ट हुआ है ह्यूमन काइंड्स के लिए, राइट, हम नए प्रोडक्ट, हम नए स्पेस मिशंस भेज रहे हैं, राइट, टू एक्सप्लोर इट, तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 अप्रैल को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अचीव किया सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, राइट, एंड वुडन फैसिलिटी डेटिंग बैक ऑलमोस्ट 1948 उसको रिप्लेस किया गया था। तो ये 3D स्टेशन बनाया गया है कहाँ पर? ये वेस्ट जापान रेलवे कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इवन अगर आपको याद हो तो जापान के द्वारा पहली वुडन सैटेलाइट भी बनाई गई थी। इस पहली वुडन सैटेलाइट का आप मुझे नेम बताओ क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट,
किस कंट्री ने होस्ट किया 8वां मीटिंग ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑन एशियन इंडिया ट्रेड्स एंड गुड अग्रीमेंट, जो कि कंक्लूड की गई 14 अप्रैल 2025 को। तो इंडिया ने होस्ट की थी इस जॉइंट कमेटी मीटिंग को। टेक अ नोट ऑफ दिस। इसके बाद आ जाते हैं ड्यूरिंग द ऑफिशियल 2-day विजिट ऑफ इटालियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो तजानी, ये इंडिया की विजिट पे थे। इंडिया ने एंड इटली ने मल्टीपल एमओयू साइन किए टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन विच फील्ड। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर नए यूज केसेस लाने के लिए, नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज लाने के लिए ये यहाँ पे एमओयू साइन होता हुआ हमें दिखा इन दोनों कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ न्यू स्कीम ऑफ पेट्रोकेमिकल्स द स्कीम ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्लास्टिक पार्क्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, राइट। कितने प्लास्टिक पार्क्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया? तो 10 ऐसे प्लास्टिक पार्क्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस देंगे, राइट, इन द केमिकल सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, करेक्ट। एंड ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करेंगे जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ रहेंगी, कॉमन फैसिलिटीज़ रहेंगी, ताकि रिसर्च के ऊपर भी काम किया जा सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू कैटेगरी कॉल्ड ब्लू कैटेगरी। ये लॉन्च किया गया इंडस्ट्रीज के लिए। ब्लू कैटेगरी क्या है? कोई इंडस्ट्री है मान लो, राइट, उसको ये ब्लू कैटेगरी सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाएगा अगर वो जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, राइट, वो एक डिजायर्ड लेवल से कम है, राइट, जो गाइडलाइन सेट की जाएंगी। एंड 3 साल के लिए इनको यहाँ पे 2 साल के लिए इनको यहाँ पे सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। एंड 2 साल के बाद वापस से इनको उस ऑर्गेनाइजेशन को, इस फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इससे होगा क्या? अगर इनके पास ब्लू सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनीज, जो इन्वेस्टर्स हैं, वीसीज हैं, वो यहाँ पे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे। एंड ये गाइडलाइन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाया जा रहा है कि क्लाइमेट के ऊपर जो कंपनी फोकस कर रही है उसको हम आगे लेके बढ़ेंगे, और जो नहीं कर रही उनको पहले ग्रीन ट्रांजिशन करना पड़ेगा। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है ये नया ब्लू सर्टिफिकेशन को? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, डैनियल रॉय गिलक्रिस्ट नोबा, इनको रिलेट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो एक्वाडोर के ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन इन अप्रैल 2025। तो ब्राइस क्लॉटेर ओलिगन नुएग्मा, इनको अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट वेयर डीआरडीओ, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा फील्ड ट्रायल ऑफ लैंड वर्जन ऑफ व्हीकल माउंटेड मार्क 2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को। तो आंध्र प्रदेश में, राइट, ये स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, पॉप स्टार केटी पेरी, इन्होंने ये एंड 6 वीमेन, मतलब 5 वीमेन और मतलब टोटल 6 वीमेन स्पेस में गई थी अभी। ब्लू ओरिजिन कंपनी ने इनको न्यू शेफर्ड रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजा था फॉर टूरिज्म मिशन, करेक्ट। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है उस स्पेस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने इस मिशन को कैरी आउट करा, तो वो है ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट, इन अप्रैल द पेरुवियन नोबेल प्राइज विनर मारियो वर्गास लौसा, राइट, इनका निधन हो गया 89 की एज में पेरू में। पूछा जा रहा है ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन विच फील्ड इन 2010। तो इनको लिटरेचर से सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड क्वांटम डे, जो कि हम 14 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, क्यून्यू लैब्स ने, राइट, एक जो कि एक क्वांटम साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है, इन्होंने आईआईटी मद्रास के साथ मिलके लॉन्च किया एक चीज़ जो कि क्या रहेगी? क्यू शील्ड। ये बेसिकली क्यू शील्ड क्या रहेगी? साइबर सिक्योरिटी को ये एनहेंस करने का काम करेगी, राइट, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी, बेटर प्रोटोकॉल्स, बेटर आपके क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो आज के टाइम पे एआई की मदद से जो हैक्स बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके, करेक्ट। तो ये आपका क्यू शील्ड सर्विस रहेगी जो कि लॉन्च की गई है, वर्ल्ड का पहला यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर सीमलेस क्रिप्टोग्राफी मैनेजमेंट अक्रॉस क्लाउड, ऑन प्रेमाइस एंड हाइब्रिड एनवायरमेंट्स, ताकि डाटा आपका सेव रहे, कोई हैक ना हो सके। Next, students, is our homework section. First question is, which is the world's strongest insurance brand? World's strongest insurance brand. Tell me the first 3, first, second and third. Second question, tell me recently which Indian naval ship will be participating in the Mauritius National Day celebrations for 2025. Then third question, tell me recently which organization takes over the Singapore fintech giant slash payments cost by 40%. Fourth question, tell me recently a internship scheme was launched for our students, right? Tell me the name of that internship launched by the government of India and the details regarding surrounding it. Then fifth question, tell me recently
who has been appointed or who will be becoming, or apart from this, tell me who has been appointed as the new chief executive officer and new president of Honda cars. Right, so these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.